Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about conditional format. आज आपको ऑफिस में एक नए डेटा पे काम और आपके बॉस चाहते हैं कि आप टॉप 5 और बॉटम 5 कस्टमर्स परचेज वैल्यू के हिसाब से हाईलाइट करें। ये करने के लिए फर्स्ट वी विल पुट अ फिल्टर ऑन दैट और फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम कोई भी एक टेबल की सेल पे क्लिक करने राइट और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्टर जो है वो अप्लाई होता है। अब ये चेक करने के लिए जो हेडर्स है उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन एरो आता है। अब परचेस वैल्यू को सिलेक्ट करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से सॉर्ट ऑप्शंस में से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हाईएस्ट नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और लोवेस्ट जो है वो नीचे। और इसके बाद वी विल सिलेक्ट द टॉप 5 टू हाईलाइट देम विद ग्रीन कलर लाइक दिस and the bottom with red. अब ये हो गया एक तरीका इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने। But as you can see, the problem with sorting is it changes the way your data was previously arranged. And in most of the cases, you want the arrangement to be same. एक काम करते हैं, इससे बेटर तरीका है। Let's undo this all and use conditional formatting to save time. Conditional formatting, as the name suggests, changes the way your data looks according to your specific conditions. It provides visual cues to help you quickly make sense of your data. Conditional formatting की मदद से आप highest और lowest values easily highlight कर सकते हैं या कोई भी अलग trend present कर सकते हो according to the condition. Conditional formatting apply करने firstly हम वो cells को select कर लेंगे जहाँ पे conditional formatting apply करते हैं। उसके लिए we will click on any cell with value and press Control Shift Down arrow. अब Control Shift Down arrow से क्या होता है, जो भी relevant cells है जहाँ पे value है वो select होता है। Then click on the conditional formatting icon. As you can see यहाँ पे बहुत सारे options हैं, but हम सिर्फ वो select करेंगे जहाँ पे ये लिखा है Top Bottom Rules और उसमें से first option पे click करेंगे, which is Top 10 icons. Once you click on it, एक छोटा सा dialog box pop up होता है asking how many ranks we want to format and the default value is 10. We can change the value as per our requirement, but हमारे केस में we need top 5. Now our condition is ready. Let's head to the formatting part. जैसे कि आप देख सकते हैं जो default option आ रही है वो है light red cell with dark red text. So we can change it by clicking on this small drop down arrow here. It gives few set templates and we are going to choose this green color option and click on OK. There you go. जो top 5 customers है वो green color में highlight। Similarly, हम bottom के 5 customers को भी highlight कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, we just select the range, conditional formatting, top bottom rules, फिर हम bottom 5 में change कर देंगे उसको। Let's keep them in red and click on OK. As you can see, the bottom 5 just got highlighted in red. Now let's say if you want to highlight customers who have ordered more than 50 units. So once again, we are going to select the range on which conditional formatting needs to be applied. Click on conditional formatting and select highlight cell rule और click करेंगे greater than. अब वैल्यू को चेंज करके 50 कर लेंगे। अब जो डिफॉल्ट फॉर्मेट वो है लाइट रेड, उसको कस्टमाइज करने के लिए विल क्लिक ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो और चूज करेंगे कस्टम फॉर्मेट। वी कैन नाउ कस्टमाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस डायलॉग बॉक्स। वी हैव नंबर फॉर्मेटिंग, मल्टीपल फॉन्ट्स, डिफरेंट बॉर्डर्स एंड कलर फिल ऑप्शन। लेट्स चूज फॉन्ट स्टाइल एज बोल्ड, फॉन्ट कलर डार्क ब्लू शुड बी एंड देन कीप द बॉर्डर्स एज डिफॉल्ट। Choose fill color as dark yellow. Similarly, आप ये less than के साथ भी कर सकते हैं, but I think you guys should go ahead and try that by yourself. Now let's open the sales sheet. यहाँ कुछ summarized data है, which can be made more presentable to understand the data more easily. Okay, so there is something wrong in this data. As you can see, there are some duplicate values in this data. And we need to make sure कि कोई duplicates ना रहे when we are presenting it. So once again,
we're going to use conditional formatting to find these duplicates. Let's select the range, click on conditional formatting, then highlight cell rules. After that, we'll choose the option of duplicate values. जैसे कि हम देख सकते हैं सारे duplicate values जो है वो highlight हो गए. And now we can delete them accordingly. So to delete it, select any duplicate cell, click on the drop-down arrow below the delete option, and then select delete sheet rows. Let's quickly do that for all the duplicates by selecting the whole row with Shift plus space and delete it by pressing Ctrl-. As you can see, all the duplicate cell values has been deleted. Now, we would like to see which salesman performed the best by achieving the highest sales value. So we'll select the range first, and we are going to select the top 5 items option in conditional format. Now decrease the value to 1 and change the formatting to green color so that we can highlight the top performer. As much as it is necessary to praise the top performer, we must also find out who struggled to perform so that we can help them. Let's highlight the bottom 3. To do that, again select the range. We are going to select the bottom 3 items option. Decrease the value to 3. Keep the formatting to light red. And here we have the struggling candidates. As you can see, there are multiple categories mentioned. And we would love to see who performed best in each category. जैसे कि आपने देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कॉलम बाय कॉलम अगर हम अप्लाई करें तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. लेट मी शो यू वन ट्रिक टू सेव यू टाइम. बट फर्स्ट एटलीस्ट एक कॉलम रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है. तो लेट्स डू दैट क्विकली. नाउ दैट वी हैव अप्लाइड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू वन रेंज, select the range, and under the home tab, double click on the format painter option. Now we can click on multiple ranges simultaneously. That was fast, right? Let me put a border. Now it's way easier to understand this data. That's it for this video. We are going to explore more advanced conditional formatting later in our upcoming videos. Stay tuned for more.